अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट क्लिनिक वंस अगेन। आपके साथ हमेशा की तरह आसिफ, मुदस्सिर और साइम हाजिर हैं। इन दिस एपिसोड वी विल गिव अ क्विक recap ऑफ द पाकिस्तान आयरलैंड सीरीज जो कि अभी कंक्लूड हुई है। ऑब्वियसली द मेन इंटेंशन बीइंग कि अब हमारा वर्ल्ड कप स्टार्ट होने लगा है। सो व्हाट आर सम ऑफ द की टेकअवेज फ्रॉम दिस सीरीज? क्या अच्छा था, क्या बुरा था, किन चीज़ों पे अभी भी हमारे क्वेश्चन मार्क्स हैं? तो सबसे पहले ओवरऑल एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। ऑब्वियसली इट्स अ वन वन वुड से इट्स अ मिक्स बैग। एक्सपेक्टेशन तो थी हमारी होपफुली कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, बट स्टिल नेवरदलेस वी वन 2-1। शुरू वाली पहली गेम हम हार गए, बट अच्छी बात ये हुई कि फिर अगली दो गेम्स हमने डिसाइसिवली एक अच्छे मार्जिन के साथ जीती। सो क्या कहेंगे ओवरऑल? आसिफ, आपसे शुरू कर लेते हैं। गिव अस sort of a overall big picture review of the series, the good, the bad, the ugly. क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या चीजें हमें ठीक करनी चाहिए? Yeah, I'll give you one of each of them. I mean, obviously, is it Bachke? We won the series, but look, the good thing for me, because again, in my mind, it's all about the World Cup. I really, even if we lost this 3-0, obviously people would be complaining, but it's all about preparing for the World Cup. So in Mere Khalme, the one question, again, at each step along the way, are we answering questions for the World Cup that get us closer to the World Cup, to get us peaking? And one question that we had going into this was our middle order over 7-15, how are we going to do? So for me, the good there is that we are finally crystallizing the personnel that we know will be required, be a solid middle order, and actually help close matches and also keep the run rate ticking. So what does that mean? We already know if Iftihar was there in the last series, he kind of proved himself. Fakhar showed that he can get it going, and he was really looking to be in good form. And then Azam Khan, again, he did not play match-winning innings, but he showed what he's capable of. And, this forms a very solid middle part of the innings where if you have Fakhar, you have Iftihar, Azam, you throw in Shadab when he comes into the team, all of a sudden, we look like our middle order is kind of solid, kind of strong. We can lose 1 wicket. We can lose 2 wickets early on. We saw that today. And we still are able to chase very high totals. So for me, that's the good. The bad, I will say, is I think with the fact that we lost this first match, what it meant was that the third match actually mattered because it matters to win the series. And so, mere zehn mein ye tha ki jo hai, and I think the PCB was thinking if we were up 2-0, this would have been a dead rubber. Usme they could have tried. There are a lot of people we brought along who were not tried. People who are on the bubble, will they not make the team? So your Niazis, your Usman Khans abroad. I mean, you bring him, he doesn't play a single match. There's quite a few of them who were there who did not get a single chance. So according to the PCB's logic, which I admit is warped and I disagree with it, is, they were going to use this to finalize the team for the World Cup. How do you include or exclude someone who doesn't even get a chance to play? That's a little, for me, that's bad. And I think part of that has to do with the fact that their thinking was, yeah, हम 2 matches आराम से जीतेंगे, we'll try everyone in third match. हार भी जाए, it doesn't matter. So that was bad. And I think they should have still experimented because who cares if we beat Ireland 2-1 or lose 2-1 at या the end of the पॉल day स्टर्लिंग if we बिठा win दिया the उन्होंने World उन्होंने Cup. अपना कैप्टन बिठा दिया। दे डिडंट हाँ केयर। उनके लिए भी बिल्कुल. हिस्टोरिकल था So ना आयरलैंड के लिए, बट दे सेड कि you have a हमने team like एक्सपेरिमेंट Ireland करना has a right. Even they have a better mindset than we do. Ugly, look, there's lots of things you can say. The one thing I'm going to say, and it's really just one name, Hassan Ali. Okay, that's all I have to say. And when I saw Hassan Ali, all I have to say is, what the fuck? That's all I have to say. Because Okay. I mean, there's nothing left to say. I mean, what basis was he selected on? What a performance he put in. And then after all of that, Babar then complimented him in the post-match comments. Well, I really do think is match ke baad we will really find out is bandi ki parchi, how strong is it? I mean, he has. I said it before. Let him go as a mascot. He has no business बाबर being in ने there तो उसकी taking up तारीफ the कर दी थी। space. बाबर ने तो आपने शायद उसकी वही तो क्लोजिंग मैं कह रहा हूँ, सेरेमनी ये नहीं क्या देखी, वो तो बकवास. उसने बड़ी तारीफ की है उसकी हसन अली की, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है I don't know. क्या है. अच्छा, But anyway, जोक्स असाइड, मिर्जा आप कुछ ऐड करना चाहोगे? जो आसिफ ने बात की है, ओवरऑल Yeah. बिग पिक्चर, प्लसेस माइनसेस। It- So, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट और कर सकते थे। इससे तो थोड़ी कुछ अलार्मिंग साइंस हैं कि मिनोज से खेल रहे हैं।
बॉलिंग जिस तरह पिटी हमारी चारों पेसर्स, स्पेशली लास्ट शाहीन वाज गुड इन लास्ट 2 गेम्स, मगर ये कि वो उन्हें दे शुड हैव केप्ट ऑन रोटेटिंग। लाइक हुआ ये कि हारिस को लेके चले गए, उसने एक गेम भी नहीं खेला। अगर वो फिट नहीं था तो ही शुड नॉट हैव गॉन टू द टूर। उसकी जगह आप किसी और को चांस दे देते। नसीम, वी स्टिल नॉट श्योर कि नसीम में क्या सिचुएशन है। आमिर वाज ओके इन पैचेस, मगर एटलीस्ट उसके लगता है कि देयर इज सम मेथड की कंट्रोल है थोड़ा उसके पास। मगर वो सबसे बड़ा फ्लॉ वही है कि अनफॉर्चुनेटली जब बाबर को दोबारा रीइंस्टेट किया था, हम लोग यही कहते हैं कि शायद वी विल सी सम चेंज। लुक्स लाइक इतना नहीं सीखा उसने, वो सेम मिस्टेक्स दोबारा हुई हैं जो बहुत ग्लेयरिंग है। मेरे लिए तो अनएक्सेप्टेबल है। मैं तो आई कैन नॉट इवन जस्टिफाई कि हसन अली किस आए, क्यों है, क्यों खेला है। इज यू नो इट जस्ट रिडिकुलस, और इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये नॉनसेंस है, सॉरी टू से। पॉजिटिव सिर्फ ये था इस सीरीज में कि आजम खान ने थोड़े रन किए, बैटिंग ऑर्डर सही लग रहा है, कुछ बेहतर हुआ है। साइम ने ओपन किया है, विकेट गिरी, तो फखर अगेन आई थिंक ही प्लेस फॉर द टीम, और वो तकरीरें नहीं करता स्कोर करके कि मुझे इस नंबर पे खिलाओ, मैं इधर नहीं खेल सकता। ही इज स्कोरिंग ऑन नंबर 4। सो फखर क्लिक साइम पहले गेम में स्कोर किया, फिर आजम खान। शुक्र है कि चाचा से ऊपर आप आजम खान को भेज रहे हैं, तो उसको ही गॉट अ फेयर शॉट इन लास्ट 2 गेम्स। आई थिंक द बिगेस्ट पॉजिटिव ये था कि बैटिंग थोड़ी, ऑर्डर थोड़ा बेहतर लग रहा है। मोर कुड हैव बीन डन। उस्मान खान को क्यों नहीं गेम दिया, आई डोंट नो। इसी तरह अब्रार, यार ही इज अ न्यू प्लेयर, उसने T20, या तो वो पुराना बॉलर होता है ना T20 में भी, तो समझ आती है कि ही इज अ मिस्ट्री। अब उसको जिस तरह उन्होंने रखा हुआ है, डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस नहीं है T20 में वो। और एक वजह ये भी हो सकती है कि अगर अगर एब्रार चल जाता तो शादाब भारी हो जाता। एक वजह ये भी हो सकती है कि दे सेविंग द स्पॉट फॉर शादाब, लेग स्पिनर ही, दोनों नहीं खेल सकते। और लास्ट But बट he नॉट didn't play the last 2 matches anyway, Shadab. या इस रिडिक, तो उसको उसको इसलिए खिलाना एब्रार को नहीं खेल। वो वही कहना चाह रहे हैं ना कि अगर वो खिला लेते और ही अगर परफॉर्म अब्रार वेल, कर तो ये देगा ना तो होता कि शादाब को या निकालना ही पड़ अब्रार, जाता। शादाब की छुट्टी हो जाएगी ना। और लास्ट थिंग जो थी, जो अगेन दिस इज नथिंग न्यू, कि ना इमाद वसीम को सिर्फ कभी ओवर ही 4 ओवर नहीं कराए जा रहे, इफ्तिखार को बॉल नहीं दी, पिटे जा रहे हैं फास्ट बॉलर, और पावर प्ले में स्पिन यूज करते हैं, तो वो मेरे कोई जीरो इम्प्रूवमेंट है। और मुझे इट्स वेरी स्केरी कि अभी ओडीआई वर्ल्ड कप में डिजास्टर हुआ है और वी आर कैरिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन, सो आई एम लिटिल वरीड। चलें चलें, मैं इसमें थोड़ी सी एक दो चीजें और ऐड कर लूं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सो आई एग्री विद बोथ ऑफ यू। उसमें मैं गुड में ऐड करूंगा कि जो हमारा एक कंसर्न रहा है ओवर 7 to 15, और इनफैक्ट जो पहले गेम में भी हम हारे हैं वो हम काफ़ी स्लो हो गए थे, और फिर इफ्तिखार की बैटिंग के बाद जो है हमने एक पार स्कोर किया था। सो एटलीस्ट जो अच्छी चीज़ नज़र आई है गेम नंबर 2 गेम नंबर 3 के अंदर, कि अगर विकटें हमारी गिरी भी हैं टॉप पे, तो उन्होंने मोमेंटम लूज नहीं किया, उन्होंने स्ट्राइक रेट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, दे केप्ट ऑन हिटिंग, वो एग्रेसिवली गए हैं। एंड दैट वाज अ पॉजिटिव, दैट वाज अ रिफ्रेशिंग थिंग टू सी। सो वो मेरे लिए काफ़ी एक अच्छी चीज़ निकली है। बैड में मैं कहूंगा कि ओवरऑल यू नो बॉलिंग, हम कहते रहते हैं यार कि बड़ी जबरदस्त बॉलिंग अटैक है, तो वी एक्सपेक्टेड बेटर। आई मीन ठीक है, जो है कंडीशन जरा डिफरेंट हैं, हम ट्रैवलिंग भी फटीक होगी फर्स्ट गेम के अंदर, बट यू नो आयरलैंड इज नॉट यू नो क्या 10th रैंक टीम है दुनिया में। वो अगर आपकी कंसिस्टेंटली 180 प्लस स्कोर कर रही है आपके अगेंस्ट, तो दैट रेजेस क्वेश्चन मार्क्स। उसके साथ साथ कैप्टनसी के अंदर भी कि फ्लेक्सिबिलिटी नजर नहीं आई, कि अगर जिस तरह फर्स्ट गेम के अंदर शादाब को मार पिट रही है, तो उसको 4 ओवर कराने की क्या जरूरत है। और ऑन द कॉन्ट्री, अगर इमाद वसीम इकोनॉमिकल है, तो उसके पूरे 4 ओवर क्यों नहीं कराए जा रहे। सो वो चीज़ कैप्टनसी के अंदर अगेन, और दूसरी फील्डिंग, फील्डिंग वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। आज की के अंदर भी वो फखर जमान ने एक इजी कैच छोड़ दिया एंड में, जो हमें कॉस्ट नहीं किया, बट अगेन वर्ल्ड कप के अंदर वी हैव टू टेक आवर चांसेस, वी हैव टू होल्ड ऑल आवर कैचेस। वो वो तो अच्छा ये हुआ कि उन्होंने हमसे भी बुरी फील्डिंग एट टाइम्स कर ली, तो वो इवन आउट हो गया, बल्कि हमारे फेवर में हो गया। एक लेकिन बंदा था। क्यों, एक ही छोड़े जा या रहा क्यों, था।
ह्यूम ने, और एक दूसरा I भी था hope Hume शायद। is selected for the World Cup. I hope Hume is there in the World I Cup. think he's gone. एक डॉकरल ने भी आज उसका बाबर आजम का कोई छोड़ा है, जिसमें ही वाज हाँ 19 रन के ऊपर, फिर उसने आके मारना शुरू कर दिया। सो फील्डिंग उनकी भी अच्छी नहीं थी, बट हमारी भी, सो फील्डिंग हैज टू बी इम्प्रूव। और बाकी अगली स्लैश क्वेश्चन मार्क्स, और हम इस पे अभी मजीद बात कर लेंगे। आई वाज होपिंग साइम वुड फाइनली show us his potential. Um, this was a good chance. On paper, not a very strong team. Good friendly batting conditions, because 180, 180 plus अगर scores बन रहे हैं, तो this was a good time for him to at least play out the power play. But वो तीनों गेम थे, पहली गेम relatively बेहतर हुई उसकी, लेकिन game number 2, game number 3, so again that raises some question marks which we can talk about. Okay, do we do anything about the opening pair, or do we make changes? तो चलें, इसी इसी को आगे लेके चले जाते हैं, जो कि यहाँ से मैंने बात खत्म की है। साइम के बारे में और ओपनिंग के बारे में क्या आपके ख्यालात हैं? वी हैव गिवन हिम अ फेयर रन, उसके तकरीबन 20 मैचेस हो चुके हैं। सो क्या आपके ख्याल है, और चांसेस दें इंग्लैंड के अंदर, या इज देयर नाउ अ केस कि हम वी गो फॉर प्लान बी, एंड इफ वी गो फॉर प्लान बी, व्हाट इज दैट प्लान बी? Promote someone like Fakhr to open with Rizwan? Yeah, do we go back to the Babar Rizwan Jodi, which has, if it's not been great for us, at least एक stability उसने हमें provide की in the past? क्या कहेंगे इस बारे में? Why don't you give your view, because you're the contrarian here. यार, मेरा मेरा तो ख्याल ये है कि we've given him fair run. So मेरे पास एक कुछ stats हैं, so I'm comparing him with a player who is very similar, who's left-handed like him, who's 22 years old. So Saim is 21. This guy, his name is Jaiswal. He is 22. So same age group. Saim has played 20 matches. Jaiswal has played 17 matches. Saim is Indian? averaging what is that? Is he Indian? Jaiswal? Indian, Okay. the Indian guy. But So T20, 17 T20s? 17 T20s. Saim has played T20 nationals. So yeah. Saim has played 20 T20 international. Jaiswal is averaging 34 with a strike rate of 162. Saim is averaging 15.8 with a strike rate of 131. And this, by the way, जो 20 मैचेस हैं, उसमें से एक फेयर चंक जो है, आप वो अभी न्यूजीलैंड के आप 4 मैचेस निकाल लो, विच जो उनकी बी या सी टीम, regardless of what you call it, it's not their full strength team. और अभी ये मैच 3 मैचेस आप आयरलैंड के निकाल। So from that angle, I'm getting really concerned now. और मेरे लिए यही है कि अगर आपने चेंज करना है अब, और अगर आपने थोड़ी सी ट्रिंकिंग करनी है, तो आपके पास पे इंग्लैंड की सीरीज है। मेरा ये बनता है कि मैं आई वुड रादर के या तो फखर को रिजवान या साइम के साथ पेयर करूं, और अगर फखर रिजवान आते हैं, तो फिर आपका बाबर रिजवान डाउन, एंड दैट अलाउज मी टू फिट इन समवन लाइक आगा या उस्मान या इवन शादाब फॉर द नंबर 4 रोल। तो ये मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आई डोंट नो, सो यू गाइस कैन वे इन, आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में? Mudassir? मेरा तो ख्याल है कि कंटिन्यू करना चाहिए। इंग्लैंड में कितने गेम्स हैं? 4 हैं या 5 और T20? 5 I think. 5 है ना? पहले आई दो थिंक तो 4 है, 4 या गेम्स 4 हैं। हैं। 4 okay. यार इतने इस पे इन्वेस्टमेंट की है, ही हैज पोटेंशियल। सीपीएल में इतना बार बार चेंजेस नहीं करने चाहिए। और टॉप 3 में वी नीड सम प्लेयर। फखर वाज स्ट्रगलिंग, और फखर को इन्होंने बहुत अरसे से ना T20 पे ही वाज एक्चुअली डूइंग रियली गुड एट वन डाउन, फिर उसी का ही नंबर ही छेड़ते हैं हम लोग। फिर साइम आया, उस्मान खान आया, तो फखर को हमने नंबर 4 पे कर दिया। ही वाज डूइंग फाइन एट वन डाउन, और लकीली ही इज कंफर्टेबल एट 4, सो वी कैन स्टिल कीप गोइंग। आई मीन और कोई ऑप्शन है नहीं। उस्मान खान को ट्राई कर सकते थे, मैं प्रॉब्लम ये है कि उस्मान खान एंड रिजवान में से एक ही खेल सकते हैं। मैं तुम लोगों को बहुत याद है, अगर बहुत पहले मैंने कहा था कि उस्मान खान की जगह नहीं है टीम में, तो लोगों के समझ नहीं आ रही थी बात। तो उस्मान खान तो नहीं खेलेगा, क्योंकि पीर साहब को आप नहीं ला सकते टॉप 3 में। तो आई थिंक वी हैव, दिस इज द बेस्ट वी कैन गेट, और आई एम ओके विद कंटिन्यूइंग इट राइट नाउ। बट फिर Yeah, उसमें I फिर mean, आप शादाब को, यू सेट आउट शादाब देन, बिकॉज अगर आप साइम को अगर ड्रॉप कर देते हो, तो जो आज वाली टीम थी उसमें आप शादाब कैन कम एट नंबर 4 और नंबर 5। you यार can put मुझे तो Shadab ठीक in लग the रहा fourth है। place. आई एम ओके विद दिस बैटिंग ऑर्डर, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट इंग्लैंड गेम। आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस। So I've said this a few times before as well. Look,
we're so close to the World Cup right now. We're talking about a major change that you're suggesting. I get the concern, but number one, my thing is we're so close to the World Cup. This is all about building chemistry of the 11 who are there, 11, 12, 13 who are coming in and out. And the number one thing you have to do is instill confidence and tell them, you are our guys. We have your back. No matter what happens, you're going to be there in the World Cup. Then they are free to play their game. I think that even if Sime gets 4 ducks against England, I don't care. He's there for the World Cup, right? That's just the way it is. Because, there's a fine line between trying to drop someone because he's not consistent versus undermining their confidence completely. You have told him up till now that you are an opener. Someone of his age, he needs to be more mature. I get that. You're pulling the rug under him. You're undermining his confidence. It could have a devastating effect on his psyche for his career. But more than that, because at the end of the day, we all want Pakistan to win the World Cup. Simon is saying what he's saying because he wants results. He wants us to win. So I get that. Look, as I've said before, numbers are numbers, and yes, they tell a story, but it's the eyeball test. He scored 45 and 29 balls in one of these matches, got us to a great start. Even if over the course of the World Cup, he does this 1 in 3 matches, he puts you on a match-winning path. You want match winners there who are going to get there. He's a good bowler as well. He's a good fielder as well. But the bottom line is, you want match winners. Now, again, remember, almost exactly a year ago, before the 50-over World Cup, we had this exact same conversation about Fakhr. And you asked me very valid questions. What is your line? At which point do you say you have to drop Fakhr? And my thing was, this guy is a match winner. Fakhr had a stronger case because he had done it in the past, and I get that. But, we saw what he did. We see where he is now. Azam, you could not have a more pitiful record in international cricket than Azam Khan leading up to the series, right? Why were we persisting with him? Because you see the talent that he has. You see that he can flip a match upside down in the space of 10 balls, 30 runs in 10 balls. TK, we didn't need it at that point, but we know what he can do. For me, Sime is a match winner, and we know that he has done it in the Caribbean. And, I feel like the Caribbean pitches will be like the U.S. pitches, maybe not a whole lot, but possibly. And so I just think that you have to stick with that. And then here's the other thing. The big thing about Sime is the ceiling is lifted. I've said this many times. The ceiling is lifted, very high risk, but when it works, we take off. When it doesn't work, what happened today? You had Babar, you had Rizwan, you have your steady Jodi, jo sabko pasand hai, theek hai, that's fine. You have stability. We have enough depth in our batting that we can afford to make a mistake. Now, one thing I will say, if Sime, through the World Cup fails, I certainly understand saying, put another pinch hitter up there, put an Usman, put Abdullah Shafiq, put someone up there. I totally get that. But now is not, if the World Cup was 6 or 8 months away and we had many, many series to do that tinkering, I'd say, okay, maybe. But now, this is the guy we've put all our faith in, all the chips are in. To pull it out from there is I just think it absolutely ruins him and ruins Pakistan in the long term. चलें इसमें थोड़ा सा मैं कुछ ऐड कर लूं, फिर अगर आप उसको मुझे दोबारा रिबट करना चाहें. आपने बात की कैरेबियन की, राइट? सो आफ्टर लूजिंग टू आयरलैंड इन द फर्स्ट गेम, मुझे तो ये पक्का भी नहीं पता कि हम कैरेबियन जाएंगे कि भी नहीं जाएंगे, राइट? फर्स्ट स्टेप इज टू गेट देयर, दैट्स पॉइंट नंबर 1. अच्छा, चलें, अल्लाह करे. दूसरी बात, you are going to be there to make sure we win in against Ireland. यार मैं तो कह रहा हूं ये इंडिया में डिबेट चल रही है, कोहली को बिठा दें, पाकिस्तान मार देगा इंडिया को. अच्छा, चलिए, दूसरी आपने बात की आजम की, कि आजम का जो स्किल सेट है ना आपका लोअर डाउन, उसके अंदर हमारे पास कोई बंदा और नहीं है, राइट? टाइम के अंदर आर्ग्यूबली देयर आर अदर प्लेयर्स ऑफ द सेम मॉडल. लाइक हारिस को हमने बिठाया हुआ है, वो उसी तरह से खेलता है. उस्मान खान जो है वो भी एक पिंच हिटर है. अब दूसरी मेरी बात ये कि अगर आप जो रिजर्व्स लेके, नॉट रिजर्व, जो आप 15 के अंदर जो प्लेयर्स लेके जाओगे, जो कि आपके टॉप 11 में नहीं होंगे, जो बाहर बैठेंगे, उनका फिर मकसद क्या है? आर यू जस्ट कैरिंग देम कि अगर इंजरी होगी तो फिर, या आर यू कैरिंग देम कि यार अगर कोई बंदा कंसिस्टेंटली फेल हो रहा है तो यू हैव अ प्लान बी, राइट? सो इफ अगर आपने नहीं ट्राई करना उस्मान खान को, अगर आपने नहीं ट्राई करना आगा को, तो फिर आप 15 में भी ना रखो. फिर आप फिर फायदा क्या है? आप रखते ही इसलिए हुए हो कि आपका अगर एक प्लान ए काम नहीं करता, यू हैव अ प्लान बी इन प्लेस. सो मेरी वो स्टेज आ रही है कि आई डेस्परेटली वांट साइम टू परफॉर्म, बट एवरी पासिंग फेलियर puts more pressure on him, puts more pressure on us as fans, because we want to see progress. करने थे तो बाबर रिजवान क्यों नहीं बैठते किसी गेम में? बेवकूफों की तरह तीनों गेम क्यों खेले सबने? नहीं तो I mean, मिनोज से 1 सेकंड, मिनोज से आप खेल रहे हो, रिजवान बाबर क्यों खेले 3 गेम?
आप बैठते, उनका उनका तो मेन प्लेयर ही नहीं खेला आज ओपनर, हम खिलाते हैं नहीं किसी को सही तरह। एक साइम एक बंदा थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया, इनका तो गेम ही यही है, 5 साल से ये एहसान करके चांस देते हैं एक दो गेम में, फिर ड्रॉप कर देते हैं, इट्स ऑल बाय डिजाइन। तो साइम को शुक्र है कि इसका चांस मिल रहा है, अब आजम खान को अब मिल रहा है तो उसने स्कोर किया ना, आप उस्मान खान को खिलाओ 5 T20, क्यों नहीं खिलाते उसको? तो मसला यही है कि फिर कहते हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपने सीरीज भी जीतनी है ना, अगर आप साइम रिजवान सीरीज, को खिला खिला के देखो आप सीरीज देखो जीते हो, उनको भी सीरीज बिठाओगे तो आपने सीरीज भी हार जानी थी आयरलैंड से। सीरीज हारने से क्या होता है, वैसे भी कौन सा तीर मार लेंगे ये लोग यार, ये कि हाँ, तो but हारी जा, लेकिन नंबर 7 पे टीम पहुंची हुई है यार, हम लोग कर क्या रहे हैं? but I mean he's talking specifically about Syme and देखो he did well in one match, he failed in 2 matches, so 1 out of 3 matches. And नहीं, it's प्लस not an ugly न्यूजीलैंड सीरीज player. भी बुरी गई है ना, न्यूजीलैंड सीरीज कौन सी अच्छी गई है? So maybe he had one where he scored like 40, 40 मैच something जीता in था। 20 balls, right? If he gets us off to a flyer 1 in every 3 matches, I think that's acceptable. The big thing is building from that. Where I will fault him, दो चीजें. एक तो maturity, he'll hit one boundary, and I thought such a huge contrast between Saim and Fakhr in match number 2. Saim hits a shot and then he tries the next one and he gets out. Fakhr chakka marke, he would take a single. सिंगल ले रहा था। Rotate straight. So that comes with time. That comes with maturity, which hopefully he'll get. I forgot what I was going to say the other. बेस्ट बेस्ट ये होता है कि हाँ. आप उस्मान भी थोड़ा और बैठता, उस्मान खान को और साइम दोनों को खिलाते, यू कुड हैव पिक हु इज बेटर अमंग देम। इस तरह अगर आप खिलाओगे ना कि साइम को ही बिठा दो, उस्मान को खिला नहीं रहे, कोई भी नहीं सेट हो सकता इस टीम में, फिर ना उस्मान होगा ना साइम। अच्छा प्रॉब्लम चलें, ये इस पे थोड़ी लंबी डिस्कशन हो गई, टू कीप आवर एपिसोड रोलिंग। अगली बात आ जाती है बॉलिंग के ऊपर, राइट? सो हमने 4 जो है पेसर्स ट्राई किए, इनफैक्ट ओवरऑल तो 5 किए, बिकॉज एक में नसीम शाह को अपने ड्रॉप करके हसन को खिला दिया। व्हाट डू यू मेक ऑफ आवर टॉप sort of 4? ऑब्वियसली रऊफ को तो हमें चांस नहीं मिला, हसन अली अगेन नो ब्रेनर, होपफुली दोबारा उसको चांस ना मिले इंग्लैंड सीरीज में। अब्बास के बारे में आपका क्या ख्याल है? हैज ही डन इनफ to continue to warrant a selection in the World Cup team? Yeah, should we think of like a fourth pacer as kind of like an all-rounder like Amir Jamal? अगर So if हम you look ये at our पूछते हैं कि go ahead. फोर्थ पेसर कौन है, तो ये मेरा नहीं ख्याल इसका कोई, इससे नो ब्रेनर, राइट? आमिर जमाल बनता है फोर्थ पेसर, हम लोग क्या करें? एक उसकी पेस 140 145 वो बॉल कराता है, 9 वो छक्के मार रहा है ग्राउंड से, इसमें मारता वो भी बाहर ही आता ग्राउंड से, अजीब की ये हरकत, जो अजीब। इंडिया ने शिवम दुबे टाइप प्लेयर रखा हुआ है, वो भी प्राइमरली तो बैट्समैन ही है ना वो, और इतना कोई अच्छा बॉलर तो नहीं है, बट उसकी पावर हिटिंग के लिए उनको एज अ बैटिंग ऑलराउंडर रखा हुआ है उसको। तो भाई उस देखो, तरह कैसे, क्योंकि अब्बास को भी अगर 40 रन पड़ने हैं 4 ओवरों में, तो एग्जैक्टली 40 रन तो उसको भी पड़ जाने हैं, तो फिर एटलीस्ट इसकी बैटिंग अच्छी है। देखो, 3 पेसर बड़े सिंपल हैं, शाहीन, नसीम तो कंफर्म है, और फिर आपके रऊफ का मुझे पता नहीं है, हाँ, आमिर और रऊफ, ठीक है, ये टाइट है 3। चौथा सेंस ही नहीं बनती आप 14 पेसर खिलाने की, चौथा शुड बी ऑलराउंडर। अब या तो आप पिच के हिसाब से तो जमाल को खेलना चाहिए चौथा पेसर, या अगर स्पिन कंडीशन है यू एड अब्रार, तो इट्स सच अ इजी So क्वेश्चन। you guys are talking about the 11. I'm talking more about the 15 here. If you look at our last episode, I think I'm the only one who kept him in our Abbas in the 15 out of 3 of us, I think, because I think he does not clear the top 3 or maybe even top 4 if Hadassov is healthy, but yeah, Banda Joanna, he always gets wickets. He performs. He has gotten a चेंज window. ऑफ पेस अच्छा है उसका, जो स्लोअर वन He's कराता है put वो। his foot in the door and he has raised his hand and said, "I'm here. I deserve to be here." He has not been overawed. Yeah, बेचारा उसको आखिरी ओवर दिया उन्होंने पहले मैच में, which he 11 didn't, रन सेव करने थे उसको। Yeah, but I mean, I think he's there now. For my money, he is never there to be in the 11 unless one of our top guys is injured, right? आप लोग बात करें, and this is where I disagree with you guys about having a fast bowling all-rounder. I get it. Number one, we know our board is not thinking along those lines. If they wanted to, Amr Jamal would be there. It would have been nice, but they're not thinking about those lines. So it's not realistic that it would happen. दूसरी बात ये है कि I'm of the firm opinion we have so many great spin options. These are going to be pitches where the ball is gripping. It's going to be slow. I am very happy to have 12 overs of pace and then 8 overs, if not more, where you choose between Saim and Iftikhar and Shadab if he's there, and Abrar if he's there, and Imad Wasim. You have a wealth of options. If Babur could get it to his head to give Iftikhar some overs,
We have that. And you know, I don't say necessarily Shadab is not my 11. You play horses for courses, you know. Which matches maybe he gets the you know, the place instead of Imad. You know, I mean, you can play back and forth and see. चलें शादाब पे आते हैं अभी इसी पे अब्बास पे एक चीज तो और, हाँ बोलें जब हम आमिर को अभी we need a big improvement. He doesn't qualify as a third bowler yet. तीन पेसर का ना कंपटीशन बहुत टाइट है. यार उस तरह तो नसीम ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं है, सिर्फ एक शाहीन की अच्छी हुई. हाँ, वो अनफिट हुआ था तो शाहीन को भी बहुत टाइम लग रहा है. आई थिंक शाहीन इज स्टिल नॉट बैक टू हिज ओल्ड सेल्फ. आज वैसे बहुत जबरदस्त बॉलिंग थी उसकी. आज काफी अच्छा था. आज बेहतर किया, मगर आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर लास्ट ईयर ओवरऑल. शाहीन, नसीम, रऊफ, आमिर, आपके पास इन तीन के ऊपर तो आमिर जमाल नहीं खेलेगा. आमिर जमाल की सिर्फ इस वक्त जगह बनती है इफ यू आर एडिंग अ फोर्थ पेसर. ठीक है, और तीन पेसर में उसकी जगह नहीं बन रही. यू कैन कैरी विद द स्क्वाड. और आई एग्री विद आसिफ भाई, अब्रार कंडीशन के हिसाब से अब्रार ज्यादा खिला सकते हैं. या मुझे उस पॉइंट पे है कि आपको 15 मेंबर स्क्वाड में 5 पेसर्स खिलाने की क्या रखने की क्या जरूरत है, राइट? तो आपके पास अगर आमिर, शाहीन, नसीम और अगर रऊफ फिट है तो you know that should be more than enough. Why have I differ only because we have a history of our fast bowlers breaking down. I would like to have 2 reserve bowlers in there. You know? नहीं तो बट उसमें रूल्स में तो अगर कोई ब्रेक डाउन कर देता है तो यू कैन मूव फ्रॉम अ रिजर्व से लेके आप 15 में ला सकते हो. बट ये है कि फिर आप उसको फिर रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट खिलाना पड़ेगा. ये नहीं कर सकते कि एक मैच के लिए ले आओ. तो वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी. लेकिन अगर कोई परमानेंटली इंजर हो जाता है तो आप एक ट्रैवलिंग रिजर्व से ला सकते हो. हमारे लोग यार, हमारे बॉलर्स नाजुक है, you know that. थोड़ा सा इधर उधर कुछ, you know, they're out for a few days and everything. So I would like to have some flexibility, especially given how Naseem just came out from an injury. I would like to have a little bit more insurance, especially since we don't have too many backup batsmen. Yeah. I thought 4+1 Jamal 5 was. मेरा भी यही ख्याल. Look, Jamal, I don't disagree with you guys about Jamal, except the board doesn't put him anywhere in. You know, who knows? वो इंग्लैंड में ही खेल रहा है. I will not be surprised कि ये हसन अली को ड्रॉप करके जमाल को डालें, एक आध मैच खिला दें और maybe he gets in. अभी हमारी टीम अनाउंस नहीं हुई है वर्ल्ड कप की ऑफिशियली. I mean, the biggest thing I think England and the Pacers is we need to see Haris Rauf. We need to see what he is. You know, if he's not fit, he can't be there. Yeah, I mean, सुनने में तो आ रहा है कि नेट्स वगैरह में अच्छी करा रहा है, बट यू नो मैच में जब तक नजर नहीं आता तो अजीब बात है. अच्छा चलें, in the interest of time, to keep this episode short as last time as well, अच्छी हमारी डिस्कशन हो गई. ओवरऑल अगर आई नो आपने बात की है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली बात, लेकिन अगर कल जिस तरह अगर हमारा मैच हो, यू नो वर्ल्ड कप कल स्टार्ट हो रहा हो, बेस्ड ऑन द एविडेंस सो फार एंड द 3 games that we have seen and obviously the big picture, knowing the history of these players and all, who would be your top 11? Would you bring back शादाब, या जो आज वाली टीम थी उसके अंदर ही आप अब्बास को ड्रॉप करके हसन को ड्रॉप? हसन ड्रॉप होता है आज की टीम से. हसन तो ऑब्वियसली ड्रॉप होता है ना, वो तो नो ब्रेनर है. दो लोग ड्रॉप. ओके, गो अहेड. और अभी नीड टू डिपेंड. अब्रार आ सकता है या तो हसन की जगह भी अब्रार आ सकता है. अच्छा, हसन की जगह अगर अब्रार आ गया और अब्बास की जगह नसीम अब्बास की जगह नसीम आ गया, या व्हाट अबाउट शादाब देन? नो रूम फॉर शादाब? वो शादाब अब्रार में से एक खेलेगा. पिक वन. So I think what you do is you see if this is a spinning wicket, you think that this is a wicket, you need to have your strike spinner there. Because Shadab ka, look, I absolutely value his role as a batsman. He has one of the best strike rates in our middle order, 100%. That one, you saw the match, the first match against Ireland. I call it vomit bowling. Yeah, matlab, it's like the batsmen know what he's going to bowl before he does. I have not seen him be penetrative at the international level in a long time. And that's okay. If he's going to be playing as a batsman, that's fine. I would not even consider him our 4th best spinner in that 11. But I still think there's a role for him. If it looks like a wicket, a flat wicket is not going to spin, put Shadab in. But if it's one that you think is going to spin, Abroad is our trump card. Take him to be, you know, to be the supplement to get those guys out with our fast bowler. I would play both Abrar and Shadab. I would play Abrar for 4 overs and Shadab for 2 overs, and primarily as a batter. And I will drop Saim. I will promote either Rizwan and Babar and have Fakhr 1 down and then Shadab 2 down. And then mainly uska as a batsman.
एज अ बैटिंग ऑलराउंडर। हाँ अगर आप उससे 4 ओवर्स लोगे, आई एग्री, हाँ वी कांट डिपेंड ऑन हिम फॉर। लेकिन अगर आपने देखा लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट किसने हमें जिताया था, जो बिल्कुल हमारी वो थी कि खत्म थी, ही वाज द वन हु स्टूड अप। सो मेरे लिए उसकी फील्डिंग और उसकी बैटिंग काइंड ऑफ कॉम्पनसेट्स। इफ ही कैन गेट 2 ओवर्स फ्रॉम हिम, I would still find a way to somehow get सही। Shadab in. देखो I'm very happy with Shadab as a substitute fielder. yeah, Yeah. things have changed a lot जब शादाब ने स्पेशली T20 में ना his stats was incredible। उसकी इकोनॉमी थी चलती थी 7 और उसकी स्ट्राइक रेट जो बॉलिंग एवरेज था 23 था। पिछले 2 साल का ना ये और नवाज दे आर इन गटर्स राइट है। इनकी इकोनॉमी चल रही है 9-10 और बॉलिंग एवरेज विकेट चल रही है 40s में। तो वो यूटिलिटी खो चुका है। अब हुआ ये कि अब आपके पास आ गए इफ्तिखार, साइम, आगा सलमान, वो और वो Imad. रन। हाँ और इमाद तो खैर वापस आया एग्जैक्टली। इमाद तो खैर ज्यादा अच्छी इकोनॉमी में इमाद की बेहतर है, विकेट भी ले रहा है। और फिर चाचा एंड आगा, स्पेशली आगा खैर अभी टीम में है, आई नो इट्स नॉट इन द टीम, मगर चाचा और इस तरह के लोग ना ये रन। चाचा वाज द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर इन द वर्ल्ड कप। तो शादाब की ना वो यूटिलिटी रही नहीं है। और I अगर mean, आप आज एक सेकंड, एक जो आज हाँ बैटिंग ऑर्डर था उसमें शादाब को कहाँ डालोगे? 4 आपके सॉलिड हो गए फखर तक, फिर आजम खान 5वें पे आ गया, नहीं, मैं तो साइम इफ्तिखार। को ड्रॉप कर रहा हूँ ना। अगर साइम ड्रॉप हो हाँ जाता है साइन को, तो या फिर देखो आपके एडजस्ट हो जाता है शादाब मिडिल ऑर्डर में, अपर मिडिल ऑर्डर में। वो यार कंसेंसस तो कभी भी नहीं होगा। दो एक दो लोग हर पर्सनल लाइक वो भी बायस भी होता है क्योंकि मगर क्योंकि साइम भी मेन तो अभी कंट्रीब्यूशन बॉलिंग में ही दे रहा है ना। 2 ओवर दे रहा है आपके इकोनॉमिकल, तो 2 ओवर तो आपके शादाब भी करवा देगा। yeah, he पता नहीं scored मुझे, 45 and 29. ऐसी भी आई क्या नो, बात बट शादाब मेरे ख्याल से तब खेल सकते हैं जैसे अब्रार को जिस तरह इन्होंने चांस दिए हैं, सही तरह खिलाया नहीं। ही माइट बी लो, है। उसको मैच खिलाएंगे वो पिट जाएगा तो शादाब वापस आ जाएगा। नहीं, मुझे ये बताओ Saim, would you give Shadab 2 overs against India? डिपेंड I करता think है। I अगर think he would go for 72 अगर runs. शिवम दुबे खेल रहा है तो नहीं खिलाऊंगा, शिवम दुबे बहुत मारेगा उसको। लेकिन Who will not hit him? कोहली फॉर एग्जांपल इतना स्पिन को नहीं मारता। कोहली लगा हुआ तो 1-2 ओवर मैं डाल दूंगा उसके। डिपेंड्स कि वो क्या किस स्टेज के ऊपर आप उसको करवा रहे हो ना। आई थिंक वी कैन फाइंड अ वे टू। So I बट think the inconsistency that you are decrying about Saim is more of an issue in Shadab's bowling. I think it is a huge inconsistency and it can hurt us a lot more. If Saim gets out, he gets out. If Shadab gives 54 runs in 4 overs, we lose the match. नहीं, वो तो मैं That's कह रहा हूँ, आई एग्री। हाँ आई वुड नॉट गिव हिम 4 ओवर्स जो भी हाँ करंट जो कॉन्फिडेंस लेवल है। लेकिन इन द पास्ट देयर बीन अ नंबर ऑफ T20 गेम्स, हाँ न्यूजीलैंड की सीरीज के अंदर ही वाजंट बॉलिंग 4 ओवर्स हाँ। कंसिस्टेंटली। उसको आप 2 ओवर करवा देते थे, 1 ओवर करवा I लेते थे, mean, 3 ओवर करवा देते थे। yeah. तो एनीवे, Look, I'm rooting for him because he is such a positive influence in the team. या His energy and all that. I really want him to do well. या I cringe when he was bowling that they just knew him inside out, and this is Ireland. या Ireland, you know? आई मीन उसको स्क्वाड में होगा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं हाँ. राइट ऑफ नहीं कर रहा, मगर जो करंट फॉर्म है उसकी कोई समझ नहीं आ रही बॉलिंग। I would put him in the 11 in some matches. I think I definitely इंग्लैंड के agree. His खिलाफ उसको batting is चांस तो मिलना very. चाहिए ना एटलीस्ट। इंग्लैंड हाँ. के खिलाफ जो 4 उन्हें गेम्स हैं, लेट्स सी Yes, हाउ ही डज। yes. कोशिश Hmm. बहुत की थी कि इमाद पिड़े है, उसको पावर, जब उसकी स्ट्रेंथ है पावर प्ले में, उससे बॉल ही नहीं दी। इमाद जब खुद कैप्टन होता है ही नेवर बोल्स दैट लेट। अच्छा, तो आप ख्याल है Yeah. बाबर ने हुआ था जानबूझ कि के ये, उसको हाँ बाय ये डिजाइन। पिटे और ये बाहर हो पे शराब आ जाए, मगर इमाद इज हैंगिंग इन सो फार। अच्छा, नहीं नहीं, इमाद तो अब आई विश के इमाद को थोड़ा बैटिंग का और चांस मिल जाता तो और बैटिंग ज्यादा भी नहीं, वो उसको बैटिंग भी नहीं आ रही है बैटिंग भी उसको खैर एंड में दूसरी आज। बात। England के खिलाफ, देखो England के खिलाफ, we're going to get destroyed by England. I hope we all know and you don't get all despondent. देखो मेरे पहले मैच के बाद मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई कि what the हाँ, heck is अगर going on. ड्रॉ कर लें somehow 2-2 तो आई विल बी रियली हैप्पी। a draw would I be a mean, win if for it's us. if it's 3-1, we lose, I'll be happy because England is going to destroy us. We're not up to their level yet. And I say I don't care. Just यार give these guys run again and again and again. You just got to get the combination. Give them some confidence. Kid, Jobio, you are our guys. You're going to come through. यार Psychologically, it makes a big difference for our Pakistan team. You know, being in the right frame of mind. कुछ ना कुछ कर लेते हैं। लास्ट हम्म, टाइम भी गए थे, बड़ी वो सी टीम से हार गए थे मुझे याद है, मगर ये एक अच्छी टीम से अच्छा खेले थे। तो आई एम नॉट, हो सकता है 1-2 मैच जीत जाए, सो इट्स ओके। इंग्लैंड में हाँ, आपने तो 2-1 समाओ, रिजल्ट फोरकास्ट किया था आयरलैंड का, और वो मैथमेटिकल मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा था फ्रॉम अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर्सपेक्टिव
अगर आप कहते हो कि 75% हर गेम में पाकिस्तान के जीतने का है, 25% आयरलैंड के का जीतने का है, तो Then we'll move on. आयरलैंड हैड a 58% chance of at least winning one game. Okay. It wasn't a surprise. So Yeah. mathematically speaking, it wasn't a surprise कि वो एक गेम जीत गए हैं. So इसीलिए it won't be a surprise कि हम एक आधा गेम जीत जाएंगे इंशाल्लाह इंग्लैंड के अगेंस्ट. इतनी भी हम बुरी टीम. वो weird ground था, छोटे ग्राउंड थे, ना स्पिन हो रही थी, ना बाउंस, वो सिर्फ स्विंग हुई है थोड़े, और सब ना वो ग्राउंड हाई स्कोरिंग ग्राउंड थे, इसलिए उन्हें दे नो देयर कंडीशन, तो उसलिए वो हर एक आध मैच मार देते हैं. चले यार, कुछ फाइनल वर्ड जो प्रोडक्शन क्वालिटी के बारे में कहना चाहेंगे, कितना आपको मजा आया मैच देखने के? लग रहा था कि सेल फोन से आप वो देख रहे कमेंटेटर कौन था ये फैसल, क्या था उसका, फैसल या जो भी था, कौन थे. कौन था हाँ, वो कमेंटेटर? फैसल पता नहीं. somebody, yeah, you're right. I think he's a local Irish guy. हाँ खैर इतना हाँ भी बुरा नहीं था. He was better हाँ, than ठीक था. उसने पीएसएल देखी हुई थी कम से कम. हाँ नहीं, अच्छा. कुछ उसको अगर बाजत खान टाइप का ही था मतलब. तो रमीज बट से तो एनीवे, था. चलें जी, होप कि आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी. तो इसी के साथ होपिंग कि हमारी हम कुछ और पॉजिटिव्स हमें मिले इंग्लैंड सीरीज रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम. बट मेन चीज़ ये है कि वर्ल्ड कप जो है हमारा अच्छा गुजरे, वर्ल्ड कप के अंदर हम अपनी बेस्ट एफर्ट करें. तो उसमें ये सीरीज जो है, नॉट परफेक्ट बाय एनी मींस, बट वी आर टेकिंग अवे सम पॉजिटिव्स एंड रिमेनिंग होपफुल फॉर द वर्ल्ड कप. इसी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद.